Am I audible? Good evening. Okay, thank you. So today I'm starting your reciprocal lattice. Okay. So very important concept in solid state physics. We use it in lattice, okay, periodic structures. Okay. So when if you want to understand the electron like behavior of a electron wave like behavior of electrons in crystal, or you want to understand the vibration, thermal vibration of atom, okay, so then this concept is very important. Similarly for X-ray diffraction also, in order to understand X-ray diffraction, geometry of X-ray diffraction, we need this reciprocal lattice. So before I define formally the definition of reciprocal lattice, okay, let me give the Fourier transform of a direct lattice. Okay, so Fourier transform of a direct lattice. So what is direct lattice? Okay, let me take the example of 1D Brevis lattice. Okay, 1D Brevis lattice. So this is my 1D Brevis lattice. Okay. Now I can define this Brevis lattice by a wave vector, by a primitive vector, say a1. Okay, which magnitude which is a, direction is x. So this lattice, one dimensional lattice, can be represented as n a1, isn't it? This is my one dimensional lattice. Okay, now I want to take the Fourier transform of this lattice. So first of all, I need to put a What is Rn equals to? Rn equal to n a1. Okay, n is the number integer. So I told you that we can write any lattice as n a1 plus m a2, okay, plus l nml l, you can write l or k, whatever, a3. So this is the one dimensional lattice. So I can write Rn equal to na1. Just give me 1 minute. Rn is the So Sir, Rn is the position vector na, of that. position vector. R is the position vector. Rn equal to na1. Now, can I put a Dirac delta function on each lattice point if I want to give the function? Okay, how this lattice can be represented? Okay, so can I represent this lattice by a train of a delta function? If I write a delta function क्या होता है? Okay, सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होता है, अदर पॉइंट पे जीरो होता है. so एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू होता है, अदर पे जीरो होता है. यहाँ पे भी लेटेस्ट पॉइंट है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेटेस्ट पॉइंट है, आसपास नहीं है. समझ रहे हो? जैसे आपको किसी पॉइंट पे चार्ज लिखना है, तो यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस पॉइंट चार्ज डेल्टा फंक्शन से. ये पॉइंट पे चार्ज है, आसपास चार्ज नहीं है, तो इसी तरह ये लेटेस्ट पॉइंट है. ओके, या मान लो आपको एटम है, चार्ज डेंसिटी है, तो this I can represent the position of atom or lattice point. Okay, I can represent by a delta function. Okay, so this is also delta function, this is also delta function. So this is like a periodic delta function. Okay, जहां पर एटम है आसपास नहीं है, इसी को तो डेल्टा फंक्शन बोलते हैं. डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
1, delta x is equal to infinite at x is equal to 0, and delta x is equal to 0 everywhere. Okay, everywhere when x is not equal to 0. यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू है, आसपास कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट है नहीं. These are mathematical concept. Lattice points are very small points. Okay, imaginary points. So this is your delta function. These all are delta functions. Okay, delta functions. Okay, delta functions. And this is called your Dirac comb. Okay, जो train है, जो rail है, train of delta function is called your Dirac comb. Okay, so I can represent a one-dimensional lattice, okay, by a Dirac comb or summation of delta functions. So if I want to represent this as a function, I can write simply this is summation, okay, n equal to minus infinite to plus infinite delta, okay, x minus na. सर आवाज नहीं आ रही। डेल्टा इक्वल टू x माइनस na. अभी आवाज आ रही है? आवाज तो फुल वॉल्यूम है सर, ठीक है हाँ सर। सर, कुछ इशू नहीं है आवाज में। हाँ. ठीक है। So this is fx is equal to summation of this one I can write. Now if I take the Fourier transform of this function, okay, so take the Fourier transform of this function and tell me what you will get. If you take the, I want to show here that the Fourier transform of a, okay, Fourier transform of a Dirac comb is again a Dirac comb. Okay, that means if you have one-dimensional lattice, if you take the Fourier transform of this lattice, you again will get a one-dimensional lattice. The reciprocal lattice of one-dimensional direct lattice is again one-dimensional. That I want to show. Okay, so just take the Fourier transform of this function. So if you take the Fourier transform of this function, okay, so this will give you f. Okay, so just let me for discuss what is your reciprocal lattice, then I will give the definition for reciprocal lattice. Okay, so now सर, f, IKNA. okay, so I can write integration, okay, integration minus infinite to infinite dx summation, okay, delta x minus na, okay, and this delta is also minus infinite to infinite. Okay, so if I take the and multiply by what? Multiply by e power iota kx. Okay, iota kx. So if I solve this one, okay, so this will give me summation of n minus infinite to infinite. Okay, the property of delta function is क्या है? Delta x minus a fx, okay, will be equal to what? fa. Yes sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e power iota kx na, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे. Yes sir. और ये क्या है? iota x iota पावर kx प्लस na क्या है? cos x प्लस sin x. ओके, तो ये क्या है? फूरियर सीरीज है. दिस इज फूरियर सीरीज and our delta function is periodic. So that means I can write my Dirac comb, okay, into Fourier series because Dirac comb is a periodic function. So again I can write Dirac comb into Fourier series. तो एक बार मैंने Fourier transform लिया, we get Fourier series, and this again I can write equal to Dirac comb. So only this indices will change. So I can write this as a m minus infinite to infinite, okay, delta kx, now x से क्या आ गया? Minus m 2 pi a. Okay, that means what I want to tell here, so I want to tell here that Fourier transform, the Fourier transform of trains of delta function, Fourier transform of delta function, okay, is also okay a train of delta function, okay, in k space, okay. That means if I want to write, okay,
I want to draw the reciprocal lattice of this direct lattice. Okay, so in one dimension. So how can I draw? That will be again. हाँ. ये जरा स्टेप जो है ना 2 पाई अपॉन a वो एक बार फिर से बताएंगे, मतलब कैसे लिखा? भी किसी भी फंक्शन को डेल्टा फंक्शन है. ओके, ये प्यूरिटी फंक्शन है. तो किसी ये पूरा प्यूरिटी फंक्शन है, तो इस फंक्शन को आप फूरियर सीरीज में नहीं लिख सकते हो क्या? फूरियर सीरीज में. ओके, ओके फूरियर सीरीज में लिख सकते हो. ओके, दैट्स सो मेरा यहाँ पे बस ये कंसेप्ट समझाने का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है किसी भी डायरेक्ट कॉम्ब है या ट्रेन ऑफ डेल्टा फंक्शन है, उसका अगर यू विल टेक द फुल ट्रांसफॉर्म अगेन यू विल train. Okay, so if I now I want to draw the reciprocal lattice of this one. Okay, so the reciprocal of lattice of this one will be again summation of delta function. Okay, only खाली आपका lattice change हो जाएगा. Earlier it was a1, now it will come b1. Okay, and b1 is what? 2 pi by a1 x cap, and this is your f kx. So Fourier transform of 1D lattice is again a 1D lattice, only distance. Now distance is what? 2 pi by a. So this is the a. In direct lattice this is the a. Okay, now in reciprocal lattice this is 1 by a. So आपका dimension change हो गया, inverse हो गया. That's why it is called reciprocal lattice. Okay, now similarly I can do this same thing for 2D lattice also. Okay, so just 2D में explain करके I will give the definition of reciprocal lattice. Okay, now here यहाँ पे एक चीज है, if you do a1 okay and b1, ये क्या है? डायरेक्ट लैटिस का वेक्टर. ये क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. So this will give you 2 pi. Okay, now let me do the same thing in a 2D lattice. Okay, so suppose I have a 2D lattice. Okay, so let us take this distance is small. Okay, so this is my 2D lattice. Okay, so this is my this is my a1 and say this is my a2. Okay, and a2 is equal to c y cap, and say this is my a1 a x cap. Okay, so this is a direct lattice. Now what we have done here for 1D lattice, same we can prove that the direct reciprocal lattice of 2 dimension is also a 2-dimensional lattice. Okay, only this dimension will change. Okay, now if I want to draw the reciprocal lattice of this lattice, okay, so this will be same, only direction will be changed. So a यहाँ बड़ा है, a2 छोटा है, तो b1 क्या हो जाएगा? b1 छोटा हो जाएगा, b2 बड़ा हो जाएगा. So now what if you want to draw reciprocal lattice of this one, reciprocal lattice, okay, that mean जो distance छोटी है वो बड़ी हो जाएगी. So this will be your this one, और जो बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी, because it's an inverse ना. So now if you take this one, okay, so now this will be your b1. Okay, this will be your b1 and this will be your b2. Okay, b2 and b1 will be what? b1 will be your 2 pi upon a, okay, x cap, and b2 will be your 2 pi by b y cap. Okay, b तो यहाँ पे है नहीं, c आई हैव रिटन ये c ना, c तो b तो यहाँ लिखा है मैंने, c लिखा है, तो c तो b भी लिख सकते हो, मैंने c लिखा है, b है इधर ऑलरेडी मैंने इससे यहाँ पे c लिखा है. ओके, सो दिस इज योर 2D. Okay, now similarly here also you can write, okay, you can do a1 b1. Okay, so a1 b1 कितना आएगा? a1 b1 कितना आएगा? 2 pi. और a1 b2 कितना आएगा? 0. Very good. Okay, that means whenever you take aj, okay, bi, okay, or ai bj, you will get delta ij. दोनों सेम होंगे तभी वैल्यू आएगी, अदरवाइज तो वैल्यू आएगी 2 पाई, और वैल्यू तो अगर सेम नहीं है, इफ i इक्वल टू j देन यू विल गेट द वैल्यू 2 पाई. ओके, इसका वैल्यू 2 पाई हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू 2 पाई if i equal to j, otherwise it will be 0 if i is not equal to j. सर 2 पाई del ij होगा ना सर?
2 pi del ij 1 sir 2 pi ऐसा लिख दो 2 pi del ij, वेरी गुड, इसको लिख दो 2 pi del ij, okay, correct. So So, please explain this one once again, please. The voice was not clear my so, side. so if a1 b1, if you take a1 b1, I'm getting 2 pi, okay. If I'm taking a1 b2, I'm getting 0. So in general we can say if I take a1 b1, I'll get 2 pi because both in the same direction, dot x cap x cap, okay. So this will be this plot will not be 0, this will be simply 2 pi. If you take a1 b2, then this is in x direction, this is y direction, the x dot y is 0, this term will become 0. Similarly, if you take a2 b1, this y cap x cap, this becomes 0. You take a2 b2, y cap, okay, so you get 2 pi. So if they are same, you'll get 2 pi. If they are different, okay, directions, you'll get 0. These are primitive vectors. Clear? Is it Yes, clear? sir. Yes, sir. Okay, okay. So this is your 2D. Okay. Now similarly, we can same way we can approach your 3D also. Okay. Now let me define what is the reciprocal lattice. Actually, how to do a definition. Okay. So now I'll put the heading definition. Okay. Okay. So suppose I have given for a given Brevis lattice. Okay, given lattice for a given Brevis lattice. Okay, Brevis lattice is, say I have n a1 m a2, say n m l l, say l a3. Okay, this is my Brevis lattice. Okay, so for a given Brevis lattice, the set of g vectors, okay, or the set of all points, or set of all points for which okay, your r g dot r, okay, g dot r is equal to 2 pi or e power iota g dot r is equal to 1. Okay, set of all points for which this property is true, okay, is called, okay, is called your the set of g vectors or the set of points in k space. Okay, in k space for which this property is satisfied is called your reciprocal lattice. Okay, so now if I define a vector g in a reciprocal lattice, okay, say this is n dash b1, okay, m dash b2, and say l dash b3. Okay, now if you take a lattice and you take dot product, if it is coming 2 pi, okay, or if you take e power iota gr, okay, so e power iota 2 pi, so e power iota 2 pi is already 1. This property is satisfied, then those all points are, okay, are the part of lattice point, or all those points will constitute your reciprocal lattice. If this definition is clear or not to you? Sir, these are both conditions are equivalent, na? G bar bar equals to 2 pi. Both are equivalent. Yes, मतलब एक true है तो दूसरी भी true होगी. बिल्कुल true होगी. Okay, तो कोई भी आप you take a direct lattice, okay, whose wave vector has given by this one. Now you take in any other lattice, okay, k space, okay, g, okay, and if you take g dot r, and if you're getting this property satisfied, okay, then these are the vectors of these are the vector of reciprocal lattice. All the point defined by these g vector are your reciprocal lattice points. Okay, अभी हमने देखा था ना, we are taking a and b. Just now I told you, if I are taking a i bj, if it is coming 2 pi,
Okay, this was one dimension. Okay, I showed you in 2 dimension also. This is true in 3 dimension also. So if you are getting this multiplication is 2 pi, okay, then that is your reciprocal lattice point. Okay, sir. Okay, so this is your definition of your reciprocal lattice. Okay, now how to if the primitive vectors vectors of that lattice is given, then how to calculate the primitive vectors of your reciprocal lattice. Okay, so for that I'm writing, if I want to calculate, if your a1 a2 a3 given, okay, these are the what primitive lattice of direct lattice. If primitive vectors are given, okay, then I can calculate in b1 in 3D. I can calculate b1. कैसे calculate करते हैं b1? How to write? b1 equals to 2 pi. b1 है तो now a2 a3, okay, and the volume defined by 3 vector a1 a2 a3. Okay, so this is your what? This is your volume in 2 pi a2 a3, and this is your volume in 3D. Okay, so volume spanned by these 3 primitive vectors. Similarly, if I want to calculate b2, okay, primitive lattice vector of reciprocal lattice, then I can write 2 pi. So b2 is coming now. What will come? a3 is this cyclic, okay, order a1, and again divide by volume a1 a2 a3. Okay, similarly if I want to write c3 will be 2 pi. c3 क्या हो जाएगा? c3 के बाद क्या आएगा? a1 plus A2. a2 and a1 a2 a3. Okay, so this will be 2 pi a3 a1 volume of 3D. Okay, so this is 2 pi a1 a2 and volume of 3D. Now what about 2D? 2D में कैसे लिखेंगे? अगर 2D में मुझे लैटिस वेक्टर लिखने हैं, this is in 3D. 2D में कैसे लिखेंगे? बस लेक्चर ला मी 2D कैसे लिखेंगे? बताया तो था सर अभी। So डायरेक्टली लिख लेंगे तो सर। हाँ, कैसे डायरेक्टली कैसे लिख दोगे? कहाँ सर b1 equal to 2 pi upon a1 हाँ, and b2 dash equal to 2 pi upon b2. okay, बरोबर. या तो तुम ऐसे लिखो. Okay, now suppose you have given in 2D. Okay, so in 2D if you want to write b1, so instead of volume, okay, instead of volume what will come? It will come your वो तो x में दे रखा था ना, डायरेक्शन दे रखी थी. अगर जनरल दे रखे तो एरिया आएगा. Okay, so area आएगा. So now if I want to write b1, so I can write 2 pi, okay, a2 b1 है तो क्या आएगा? a2 आ जाएगा. a2 into z cap, okay, और area. This will be volume. Instead of volume, this will be area in 2D, volume in 2D. Okay, now z cap क्या? z cap क्यों आ रहा है? If this is true, if okay, if you have a1 in x direction and a2 is in y direction, okay, so you have to take the perpendicular, जो area के perpendicular जो vector है, okay, area के जो perpendicular vector है, that you have to take this one. Okay, और इससे भी आसान तरीका है इसको याद करने का. You have b1, okay, so b1 को कैसे लिखते हैं? 2 pi. ये तो सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसमें तो. कैसे चेंज हो जाएगी? सर जैसे अभी a1 की डायरेक्शन मींस x कैप थी. हाँ, अगर मैं मान लूं x कैप थी तो देखते हैं अभी करते हैं. हाँ सर ठीक है. हाँ सर ठीक है मैं ठीक है. तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जब b1 है तो हमें क्या लेते हैं? a2 into a3. ओके, तो a3 को लिख दो आप, आपका z कैप है. बाकी सब इसको वॉल्यूम बना दो. इसको जैसे लिखते हो वॉल्यूम वैसा लिख दो, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये वॉल्यूम, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे भी तो इसका एरिया, इस वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा, वो एरिया रहेगा. ओके, सो आइदर यू राइट लाइक दिस वे 2 पाई. नाउ b1 है तो क्या आएगा? a2 आ जाएगा. a2 you write a3, okay, and again you write the area is what? a1, sorry, area is what? Area is your now this one a3, okay, a3 dot
your A2 सॉरी A1 क्रॉस A2 ऐसे लिख दो। तो ये एरिया का एरिया रहा, ओके, ये 1 हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर, इन दिस वे यू कैन रिमेंबर करने का तरीका है, ओके। जस्ट लेट मी राइट। डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया था उसमें डायरेक्ट इसमें 2D लैटिस में A1 डॉट B1 इक्वल टू 2 पाई और फिर B1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन A x कैप, जिस भी डायरेक्शन में होगा अपोजिट करके। नहीं तो अगर वो तो देखना पड़ेगा ना करके। अभी मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ओके। सो सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट B2, तो B2 आई कैन राइट व्हाट 2 पाई, ओके। तो B2 आई कैन राइट 2 पाई जेड कैप। B2 क्या होता है A3 इंटू A1, ओके। A1 तो A1 है, तो ये आएगा आपका। एंड द वॉल्यूम विल बी अगेन योर A3, ओके। वॉल्यूम तो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड लेना है आपको, दिस विल बी योर A1 क्रॉस A2। सो इन दिस वे आल्सो यू कैन रिमेंबर। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सर ये तो आ रहा है। सो दिस 2 पाई, तो जेड की जगह हम कंसीडर कर रहे हैं। हाँ A3 को जेड कंसीडर कर रहे हैं, तो यू कैन राइट A3, यू कैन राइट A3 A1, ओके, एंड A3, ओके, एंड A1 क्रॉस A2। ये तो स्केलर क्वांटिटी है प्रोडक्ट, ओके। इसमें ये कुछ चेंज करेगा नहीं आपका। तो जैसे ये A3 क्या है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। सपोज A1 A2 आपका जेड कैप आ रहा है, तो ये भी जेड कैप ही है। ये क्या है 1 इंटू जेड कैप है। व्हाट दिस इज 1 इंटू जेड कैप ना। A3 इज व्हाट 1 इंटू जेड कैप। जेड कैप से जेड कैप डॉट जेड कैप 1 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये इसमें कुछ चेंज तो कर नहीं रहा है। तो दिस वे यू कैन राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। दिस इज इजी टू रिमेंबर। तो आपको जो 3D में है वो सेम 2D में याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। इसमें फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगा। खाली A3 को आप जेड के कंसीडर कर सकते हो इफ द प्लेन इज XY। इफ दे आर गिवन इन XY प्लेन, द परपेंडिकुलर, ओके, द परपेंडिकुलर वेक्टर of this one you can consider unit vector in as a A3, okay. So this is your formula in 1D and 2D, okay. So let us solve some problems. So in your booklet, some gate problems are given, okay. Let me take those problems. Gate. सर हम A को भी रिप्लेस कर सकते थे या सिर्फ A3 को ही करना है? रिप्लेस तो किसी को किया नहीं हमने। मतलब यहाँ पे हम जो वॉल्यूम लिख रहे थे A1 डॉट A2 A3, उसकी जगह हम लोग अब जहाँ पे हम इसको एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम A3 लिख रहे हैं। वो आपको ये वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम सेम रहता है। चाहे A1 डॉट A2 A3 लिखो, A3 डॉट A1 A2 लिखो, वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, ओके। तो ओनली जो वेक्टर मिसिंग है, A3 मिसिंग है, उसको मैंने जेड कैप ले लिया, ओके। और जेड कैप क्या है, जो आपका A1 A2 है उसके उनके क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर है। जिस प्लेन में है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ओके। So now let me solve one problem. Shall I erase this one? इसको erase कर दूं मैं? Okay. So let me start with this simple problem. Then we'll do exam problems. Okay. So say let us A1 is given. Okay. A1 is given. Say bx cap. Okay. And A2 is given. Say minus b2 x cap plus b2 y cap. Okay. Now calculate. Find reciprocal lattice vector. Find b1 and b2. Find करो। कैसे करेंगे? तो नाउ सो ये दोनों तो क्या है, A1 भी एक्स के डायरेक्शन में, ये भी आपका XY प्लेन में ही है। दिस आल्सो एन XY प्लेन, ओके। So just write the formulas, okay. So the formula will be B1 will be what? B1 will be your simply 2 pi, okay, by B
and what should I write? What should I write here? A2 A3. Okay, so A2 A3 is z cap. Okay, divide by z cap dot A1 क्रॉस A2. कितना आ रहा है बताओ मुझे, इसका आंसर क्या आ रहा है? सर 2 पाई बाई b कैन b क्यों होगा सर? तो क्या लिखना चाहिए? सर तो 2 पाई होगा फॉर्मूला से। 2 पाई, अच्छा 2 पाई सर, ठीक 2 पाई सर। कितना आ रहा है? सो A2 z cap, दिस इज 2 डायमेंशन ना, सो A2 z cap, z cap करेंगे तो क्या हो जाएगा? zx क्या हो जाएगा यहाँ पर? b/2, ओके b/2 ओके x योर x क्रॉस z माइनस y कैप, ये प्लस हो जाएगा। देन यू हैव अगेन y क्रॉस z, x कैप रहेगा, x कैप रहेगा तो b/2 रहेगा, b/2 x कैप रहेगा। ओके, एंड हियर यू हैव z कैप। ओके, z कैप a1 क्रॉस a2 कितना आ रहा है? a1 क्रॉस a2 कितना आ रहा है? आई थिंक b²/2 आ रहा है, b²/2 z cap. So we have to take only magnitude. So this will be what? b²/2 z cap. Okay. So now z cap dot z cap 1 हो जाएगा, and you have this one. So this should come 2 pi by b x cap plus y cap. ये आ रहा है क्या? Yes sir. बाकी लोग का आ रहा है? Now what about b2? b2 क्या आएगा? ऐसा कैसे निकालो सेम? ना क्या A3 क्या हो जाएगा? Let your A3 is z cap. और आपको पता नहीं चलता कि z cap है क्या है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, जो डायरेक्शन आ रही है वही इसको लेना है, A3 को लेना है। यहाँ पे करोगे तो x क्रॉस x तो 0 हो जाएगा, x क्रॉस y z आएगा तो z, इसलिए हमने z ही लिया है, इसको प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। कितना आ रहा है? तो दिस शुड कम 4 पाई बाय b y कैप। ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. So this is easy. Okay, you can try it. Okay. Now let us solve some. इस बाकी लोगों को आ रहा है कि आ रहा है सब ये? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? Okay. So let me solve the now exam problems. Okay. So we have given the vectors, primitive vector of direct space. A1 is equal to ax cap. Okay, and A2 is equal to a/2 x cap plus √3 y cap. Okay, so this is the GATE 2017 problem. Okay, and asking what is the primitive vector of reciprocal lattice. Okay, so they have given the options. Option A is 2 pi by a x cap y cap √3, okay, and 4 pi a upon √3 y cap, okay, and the option B is 2 pi a x cap plus y cap √3, okay, and 4 pi by a √3 y cap. Okay, अब मैं सारा ऑप्शन लिख रहा हूँ, इन दो में से एक सही है, बता दो क्या सही है, कैसे निकालेंगे इसको. Okay, now if I want to calculate b1, okay, so b1 will be what? So b1 will be your simply b2, okay, 2 pi a2, okay, a2 into a3 again I'm taking z cap, ये परपेंडिकुलर होगा इनका, x cap y z cap आएगा, तो z cap, okay, now I'm taking z cap dot a1 cross a2. So if you take b1 will come what? 2 pi
a2 z cross, so x cross z, okay, x cross z minus y, so minus a by 2 y cap, okay, y cross z x, okay, so a root 3 by 2 here, y x cap, okay, and this is a z cap आएगा, so a1 this will be 0, okay, x cross root y 3 a square by 2 root 3 है ना, root 3 a square by 2. ओके, ये आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, रूट सर 3 यार, a square by 2 आ रहा है, a स्क्वायर बाय 2 है, ये root 3 a square by 2. नीचे a स्क्वायर बाय 2 आएगा, नहीं सर, root 3 ऊपर a square, ऊपर a square नीचे 2. हाँ ये आएगा, ओके, नहीं सर, a ए square ऊपर स्क्वायर न्यूमरेटर में आता यहाँ पर a square ऊपर A होगा, square, 2 A नीचे square. 2. a स्क्वायर 2 रूट 3 है ऐसा, है सर, रूट 3 ऊपर और 2 नीचे. अच्छा, ओके ठीक है, चलो निकालो, a स्क्वायर रूट 3 बाय 2, सो तो क्या आएगा आंसर, कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से, सो ये y आ रहा है, ओके, तो कॉमन निकालो, क्या क्या कट रहा है इसमें से, 2 पाई बाई a, ओके, जेड कैप तो वन हो जाएगा, ओके, एंड दिस 2 कट जाएगा, a कट जाएगा, so this will be your, so if I solve this one, okay, so this my b1 will come 2 pi, okay, upon a square root 3 by 2, okay, minus a by 2 y cap plus a by 2 3 root x cap, okay, so this will give me 2 pi, okay, a तो कैंसिल हो जाएगा, 2 pi by a फिर कॉमन a कट जाएगा, okay, and then root 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, so this will give me x cap minus, okay, 2 तो कैंसिल हो जाएगा इससे, y कैप रूट 3, ये आ रहा है क्या आपका, ये आ रहा है, yes sir, Yes, sir. तो पहला ऑप्शन ही सही है, और b2 क्या आ रहा है, b2 ये आ रहा होगा, if you calculate b2 Sir, should come B2 minus आ रहा है. Minus y का. माइनस क्यों आएगा, आपने z को z को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपकी, हाँ B2 सर, का Z और X है ना सर. तो b2 क्या आ जाएगा, so b2 will be your b3, okay, 2 pi, b3 is what, b3 is your z cap, okay, b3 b1 is what, a1 x cap, and divide by niche same, so if you divide by same here, okay, so this will come your z cap a1 cross a2, so if you take this one, this will come b2 minus 2 pi z cross x is, z cross x क्या हो जाएगा, y, okay, y cap, so z into y cap, okay, and a1 y cap, ay cap, okay, y cap, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, ये root सेम 3 है, a square. a स्क्वायर रूट 3 बाई 2 से भी आएगा, तो माइनस आ रहा है क्या, सर माइनस नहीं होगा सर, तो माइनस क्यों आ रहा है इनका, सर z क्रॉस y ना, ये सर माइनस नहीं होगा. क्यों, सर Z क्रॉस हाँ जेड क्रॉस X है ना, जेड क्रॉस हाँ. यही तो z है, क्रॉस ठीक है ना, तो 4 पाई आ रहा है ना आपका आंसर, जो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन यही तो आ रहा है, ठीक है, yes so option A is correct if you solve this one, okay, Sir, 4 pi upon root 3a. हाँ, so b2 will be your 4 pi, okay, 4 pi a root 3 y cap, okay, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम गेट एग्जाम,
So this is GATE 2013. GATE 2013. Okay. So they are given a lattice has the following primitive vectors in angstrom. A1 is equal to 2j plus k cap. Okay. And then B is given as 2k cap plus I cap. Okay. And C is given here 2I cap plus j cap. Okay. So they're asking the reciprocal lattice corresponding to the above lattices. Okay. So option A is given BCC lattice with cube edge of pi by 2 angstrom. Okay. And then again asking BCC lattice with cube edge of 2 pi angstrom inverse. Okay. And then he's saying C option is FCC lattice with the option B pi by 2 angstrom, and the option D is what? FCC lattice with 2 pi angstrom. Okay. So question simple है. You have A, B, C. Just calculate B1, B2, B3. If this B1, B2, 3 are coming like primitive vectors of your BCC lattice, okay, then it is a BCC lattice. If these are coming a primitive vector of FCC lattice, then it is FCC lattice. Now remaining thing is not what is the A की value कितनी है, lattice constant A की value कितनी है यहाँ पर. So then you should remember what is the lattice parameter of your BCC lattice. तो BCC lattice के parameter क्या क्या होते हैं बताओ, क्या क्या होते हैं BCC के? सर I cap plus J cap minus K cap. ये वाला एक दूसरा वाला भी है, वो दूसरा वाला क्या है? सिंपल वाला जो है, दो लिखाए थे मैंने, दो लिखवाए थे, दो तरह के लिखाए थे आपको. हाँ ये सर. कौन सा था दूसरा? क्या था? A1 AX cap और A2 y cap AY cap and A3 a by 2 x cap plus y cap plus z cap Y cap plus x cap plus z cap. X cap plus Z cap. बस इतना ही है सर y cap भी है. Y cap भी है, Y cap प्लस Z cap. ओके. अब मल्टीप्लाई करो और बताओ ये A की वैल्यू कितनी है. ये पहले बताओ BCC लैटिस है कि FCC लैटिस है, निकालो इसका. ओके. Assuming what you told me is correct. Okay. Now let us solve this one. Okay. So B1 is what? B1 is your 2 pi. Okay. A2 A3 and volume of A1 dot A2 A3. ओके. तो पहले सबसे पहले वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम कॉमन है तो वॉल्यूम निकाल के रख लो. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूम कितना आ रहा है बताओ मुझे. A1 डॉट A2 A3 वॉल्यूम कितना आ रहा है? ABC यहाँ पे ABC है, ये A1 A2 यहाँ पे ABC है. ओके. दिस इज ABC instead of A2 A3 your ABC here. So this is your 2 pi B cross C. Okay. And this is your A cross A dot B cross C. तो बताओ कितना आ रहा वॉल्यूम? A dot B cross C. कितना आ रहा वॉल्यूम? किसी का वॉल्यूम नहीं निकला अभी तक? सर कर रहे सर. 16 आ रहा है. 16. ओके.
So this will be 2 pi b cross c 16. V1 और pi आ रहा है। b क्रॉस c क्या होगा भैया? अभी तुम इतना टाइम लगा रहे हो। b क्रॉस c सिंपल हो जाएगा, ये 4। ओके, k को करोगे तो i से क्या आएगा? k इंटू आई जे। ओके, k इंटू j माइनस आई। करेक्ट सर 8 आ रहा है सर। k into j minus I. Okay, again if you do I cross I is 0. If you do I cross j, it will be k. Okay, and then you do dot product with a1. A is what? A is your 2 j plus k. Okay, so this becomes your 8. Okay, 8. Now you j multiply by j1, others are 0. K multiply by 0, k dot k is 1. Okay, तो 16 तो आएगा। कितना आ रहा बाकी लोगों का? 16. 16 हाँ आ रहा है। सर। Okay, 16 आएगा। Okay, this is 16. Now b cross c क्या आ रहा है? अभी निकाला ही था मैंने। So this will be pi by 8 and b cross c क्या आ रहा है? Minus 4i cap plus 4j cap plus 4k Minus 4i plus 4j minus 4i plus 4j. Okay, plus 4k. plus 4k. Okay, very good. तो इसमें वो वाले वेक्टर लगाना है आपको. Okay, so this will be solve this one. This will be pi by 8 into 4. So this will be minus I plus j plus k. Okay, so this become 1 by 2. Okay, so pi by 2 minus I plus j plus k. So you can compare now equations. Okay, so you have to write the other expression. Other expression में क्या आ रहा है? जिसका जो दूसरे वाले हैं उसमें क्या आता है? a1, a2 and a3. Okay, तो इसमें ये a by 2 आता है कि सब में a आता है? इस a by 2 x cap plus y cap minus z cap. Okay, सर a/2 आता है सर। सर a/2 है सब में। और माइनस किसके पास? a1 है तो माइनस कहाँ पे आएगा? z पे। z पे। और a2 में x पे। सर x पे। y cap plus z cap। और a3 में y y पे। पे। y पे x cap माइनस y cap प्लस z cap। ओके, तो उसे कंपेयर कर लो। अब ये पाई बाई a by 2 क्या आ रहा है आपका? a by 2 इक्वल टू आ रहा है पाई बाई 2। ओके, a by 2 इक्वल टू आ रहा है आपका पाई बाई 2। ये मिस्टेक क्यों आ रहा है फिर अपना? पाई बाई 8 आ गया यहाँ पर। ओके, सो दिस इज 16 कैलकुलेशन सही है। पाई बाई 8 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में करने से तो हमारा a तो हमारा पाई आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया? दो के फैक्टर में मिस्टेक हो रहा है, चेक करो। हाँ, पाई बाई 2 तो आएगा। पाई बाई 2 हाँ। सब में आई थिंक सब में आई थिंक a by 2 नहीं आता है। ओके, मुझे चेक करने दो कल के नोट्स। सब में a by 2 नहीं आता है शायद। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC। ओके, बस एक दो बच्चे कर रहे हैं, बाकी कर भी नहीं रहे हैं बैठ के। सर यही होते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स, आपने दिए हैं उसमें तो यही है। और a की वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई 2 आ रही है क्या? पाई आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है? a की वैल्यू क्या आ रही है? ओके, सर पाई आ रही है। पाई आ रही है। a की वैल्यू पाई बाई 2 आनी चाहिए। जस्ट लेट मी चेक वेक्टर्स, वेयर इज द वेक्टर्स। ओके, अब चेक करो एक्चुअली पाई बाई 2 आनी चाहिए। आंसर में तो पाई बाई 2 दे रखा है ना। पाई बाई 2 आनी चाहिए। कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ करने में मिस्टेक हुआ है हमारा। पाई बाई 2 एंड दिस शुड बी ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके। पाई बाई 2 पाई का ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। ओके,
कुछ मल्टीप्लिकेशन का मिस्टेक हुआ है। 8 2 2 2 2 4 चेक करो। ओके, चेक करके बताओ। और इसको इसको अभी होमवर्क दे रहा हूँ, अभी करके भेजो मुझे इसको। ओके, होमवर्क अभी करके भेजो। क्या कुछ 2 का कोई मिस्टेक आ रहा है, चेक करके बताओ मुझे। सर एक बार कैसे निकालेंगे, एक बार बताओ। क्या निकालना है अभी? भी आपको भी आप इनको आप B1 B2 B3 निकाल लो, और फिर देखो कि आपके जो वेक्टर आ रहे हैं वो एफसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर हैं कि बीसीसी के हैं, उनसे कंपेयर करो, और कंपेयर करके इक्वल निकालो। आपको जो आंसर में आ रहा है और इधर जो फॉर्मूला आ रहा है उनको ए को कंपेयर करो। मतलब तीनों निकालने पड़ेंगे ना, तो ही हम फॉर्म से हाँ, कर लेंगे। भी या तो फिर A3 निकाल लो। ओके, A3 निकाल लो यहाँ से, जो आप B3 निकाल लो, फिर इससे कंपेयर कर लो। वो तो A/2 था ही है। किसी भी फॉर्म में जो आप जिस फॉर्म में आ रहे हैं उसी फॉर्म में कंपेयर करो, जो वेक्टर जिससे आ रहा है उससे कंपेयर करो। ठीक है, निकालना है कोई A/2 है और निकाल के बताओ मुझे। अभी होमवर्क भेजना। ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर। बीसीसी में हमारा वॉल्यूम क्या आता है? बीसीसी में हमारा जो वॉल्यूम आता है हमेशा, ओके, वो AQ/2 आता है। 2 आता है वॉल्यूम, AQ/2 आता है। जो भी हमारा लेटेस्ट होता है उसका A/2 आता है। और एफसीसी में आपका AQ/4 आता है, नीचे का वॉल्यूम प्रिमिटिव वेक्टर्स का। तो चेक करो एक बार कैसे क्या मिस्टेक आ रहा है। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, भेजो उसको करके मुझे। ओके सर, थैंक यू सर।